This topic is our highest understanding of God. तो ये जो विषय है, ये जो भगवान है उनकी सर्वोत्तम ज्ञान के बारे में है। And as such, I am not feeling very qualified to speak on it, and I'll try and speak what I can understand. और मैं मानता हूँ कि मैं इस ऐसे विषय पे चर्चा करने के योग्य नहीं हूँ। First thing we should understand, what is Ras Lila? It's being spoken here, Ras Lila. तो यहाँ पे जो रासलीला के बारे में बताया गया है उसके बारे में थोड़ा सा। There is a class of person who is ignorant of the glories of the Supreme Personality of Godhead. तो ऐसे कई श्रेणी के लोग हैं जो भगवान की लीलाओं के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं। And they say, we will worship Rama because he shows good example to human society. But Krishna, he's dancing with other people's wives. तो लोग कहते हैं कि हम राम भगवान की पूजा करेंगे क्योंकि हमने बहुत ही सर्वोत्तम चरित्र दिखाया है। लेकिन कृष्ण, हम कृष्ण की पूजा क्यों करेंगे? कृष्ण तो औरों की पत्नियों के साथ रास करते थे। Even in Pushti Marg, they like to worship Krishna as a little boy. But when he gets big, he gets in trouble. We won't worship him. तो लोग अधिकतर भगवान कृष्ण की पूजा करने चाहते हैं जब वो छोटे बालक हैं। लेकिन जब कृष्ण बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं नहीं, हम कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे। These are all misconceptions of the Supreme Personality of Godhead. तो ये सारी भ्रांतियां हैं भगवान कृष्ण की। To understand Leela, first we have to go to Tattva. तो किसी भी लीला को समझने के लिए पहले हमें उसका तत्व को समझना होता है। Siddhanta. सिद्धांत को समझना होता To understand Krishna as the Supreme Personality of Godhead. है और ये समझना होता है कि भगवान ही सर्वोत्तम है। Like someone may say, how is it possible that a 7-year-old boy lifted a mountain? तो ये कैसे संभव है कि 7 साल का लड़का इतना बड़ा गोवर्धन उठा रहा है? Best thing, understand who is that 7-year-old boy and what is his power. तो ये समझना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि ये जाने कि वो 7 साल का लड़का वास्तव में है कौन। So similarly, before we jump to conclusions that Krishna is immoral, that he's dancing with other people's wives, we should understand who is Krishna. तो इससे पहले हम ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कृष्ण वास्तव में है कौन। And who are those gopis? And वो गोपीज कौन है? So Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Throughout Vedic literature we find him glorified. Aham sarvasya prabhavam matas sarvam pravadin iti matva bhajanti mam buddha bhava samannita. I'm the Supreme Lord, everything comes from me. तो जैसे प्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है और भगवान गीता में बताते हैं हम सर्वस्व लोगों की नई सब चीजों का कारण है। Arjun said, Param Brahma, Param Dhamma, Pavitam Paramam Bhavam, Purusham Shasritam Divyam Adideva Majam Vivam, Ahustam Rishaya Sarve, Devarsha Narada Sata, Asita Devalo Vyasa, Swayam Chaiva Vivishime. Someone may say, Krishna, Arjuna is just butter polishing. He's just praising Krishna because he's family member. So अर्जुन भी जैसे बताते हैं श्लोक में भगवान की जैसे भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है और कोई कह सकता है कि नहीं अर्जुन तो भी भगवान की रिप्रेजेंटेशन में ही है तो अर्जुन इसलिए भगवान कृष्ण की इतनी तारीफ कर रहे हैं। Arjuna is indeed saying that Krishna is Supreme Personality God, but Narada is also saying Asita, Devala, Vyasa, all spiritual authorities saying this person, Lord Krishna, is the Supreme Personality of Godhead. तो सिर्फ अर्जुन ही नहीं कहते कि भगवान पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, नारद मुनि व्यास देव और भी कई महात्मा कहते हैं कि भगवान ही सर्वपुरुषोत्तम भगवान है। And Swayam Chaiva Vivishime, Krishna himself is saying, I am the Supreme Lord. और भगवान स्वयं भी कह रहे हैं कि नहीं स्वयं हूँ सब कारणों का कारण। He says, Matak Parataram Nanyat Kinchirasti Dhananjaya Mai Sarvamidam Protam Sutre Maniganaiva. Everything rests upon me as pearls are strung in a thread. I am the Supreme Person, highest authority. तो ऐसे जैसे मतलब श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं ही सबसे सर्वोत्तम हूँ, सारी सुप्रीम पर्सनालिटी हूँ और मेरे पे ये पूरा संसार टिका हुआ है। So who are the gopis? तो अब गोपीज कौन है? In the early days of ISKCON, ISKCON के शुरुआती सालों में Srila Prabhu was asked by the editors of Back to Godhead magazine how to present gopis in a magazine. तो प्रभुपाद जी का लिखने का विषय था कि कैसे बैक टू गॉडेड मैगजीन में गोपीज के बारे में लिखा जाए। Are we to hide them? Like we don't talk about gopis?
तो जनरली क्या होता है कि हम मतलब गोपीज के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। Prabhupada said, don't boycott the gopis. प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, जो गोपीज हैं उसके उनको हटाइए मत। But how to understand gopis? लेकिन कैसे समझ सकते हैं? As we need to understand who is Krishna, we should understand who are gopis. जैसे हम को समझना होगा कि भगवान कृष्ण कौन है, ऐसे ही जो भगवान की गोपियां हैं हमें उनको भी समझना होगा। Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita Vistabhya Yesha Nija Rupataya Kalabhi. They're expansions of Krishna's Ladini Shakti. तो जो गोपी है वो भगवान की आराधना शक्ति का विस्तार है। Nija Rupataya, his own energy, his own self. तो वो भगवान की शक्ति है, वो भगवान का एक अंश है। So people say, oh, Krishna is dancing with gopis, some village girls, and they're having some night dance, they're dancing at night in the moonshine. लोग कहते हैं कि लोगों कृष्ण ये कृष्ण कौन है? ये तो गोपियों के साथ डांस कर रहा है, ये तो जो गांव में उनकी साधारण स्त्रियां हैं। But how many gopis are there? And how long did they dance? लेकिन कितनी गोपियां हैं और कितने समय तक वो नृत्य करते हैं? Srila Bhaktivinoda Thakur says, Shatakoti gopi, 10 billion gopis. तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कितनी गोपियां हैं? 10 बिलियन गोपीज हैं। This is Lord's pleasure potency, his capacity to enjoy and dance with beautiful girls. तो ये भगवान की प्लेजर पोटेंसी है, ये भगवान की योग्यता है, वो इतनी गोपियों के साथ डांस कर सकते हैं और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। That are expansions of his own energy. ये भगवान की एक्सपेंशंस हैं जो गोपीज हैं। And how long did they dance? और कितनी देर तक वो नृत्य करते हैं? One day of Brahma. एक दिन, ब्रह्मा जी ने एक दिन के लिए वो नृत्य करते हैं। So let us understand the situation from tattva before we jump to conclusions and find fault with Lord Krishna. इसलिए हमें जो ये विषय है इसको तथ्य से समझना चाहिए, इसके सीधा हमें कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए। We read in the introduction to Chaitanya Charitamrita हम जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में to give us some understanding of Radha and Krishna. कि हम थोड़ा सा जान पाए और राधा कृष्ण के बारे में। There it said, Radha Krishna Praniya Prakriti Ladini Shakti Rasmat Ekatmana Vapi Bhuvi Puradeha Vedam Gatoto Chaitanyakam Pakadamadhanam Tagdayam Chakyamaptam Radha Bhava Suvalitam Nomi Krishna Swarupam. That Radha and Krishna are the topmost irreducible conception of God. जो राधा कृष्ण है वो सबसे सर्वोत्तम एक ऐसा विचार है जिसको समझना भगवान का बहुत ही कठिन है। And this is manifestation. Who is Srimati Radharani? Manifestation of Krishna's Ladini Shakti. तो राधा रानी वास्तव में कौन है? वो भगवान की आराधनी शक्ति की एक्सटेंशन है। She is as good as Krishna, as powerful as Krishna. तो वो भगवान की ही जैसी है और भगवान की जितनी हमें राधा रानी में भगवान की जितनी ही शक्ति है। What is the difference between Radha and Krishna? So जो राधा और कृष्ण में क्या अंतर है? Like sunlight and sun. तो इसी प्रकार से है जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी। What is the meaning to sunlight without sun? तो जैसे सूर्य की रोशनी का कोई मतलब नहीं होगा बिना सूर्य के। And what is the meaning to sun without sunlight? और इसी तरह जब सूर्य का भी कोई मतलब नहीं होगा बिना सूर्य की रोशनी के। Jai Jagannath Swami. So what is the meaning to Radharani without Krishna? इसलिए राधा रानी का क्या मतलब है बिना कृष्ण के? And what is the meaning to Krishna without Radharani? ऐसे ही कृष्ण का क्या मतलब है बिना राधा रानी के? Once the Maharaj of Bharatpur came to Radha Kund, and he and his family were doing Dandavat Parikrama around Radha Kund, doing full obeisance, putting stone, moving all the way around Radha Kund. Maharaj of Bharatpur. Bharatpur. एक बार राधा कुंड में गए और खूब परिक्रमा लगा रहे थे, एक जन्म परिक्रमा लगा रहे थे। So a disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said to him, just see how devoted they are to Srimati Radharani. तो ये ऐसे ही शिष्य भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बोला उनको देखिए ये कितने डिटरमाइंड डेडिकेटेड है राधा रानी की सेवा में। Because she is so dear to Krishna. क्योंकि ये कृष्ण को बहुत प्रिय है। So Saraswati Thakur said, no. तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते नहीं, ऐसा नहीं है। Why do we worship Krishna? कि हम भगवान कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? Only because he is dear to Srimati Radharani.
क्योंकि वो राधा रानी को बहुत प्रिय है। So we are Gaudiya Vaishnavas, and this is our highest conception of life, our highest aspiration. तो इसलिए कि हम बड़े वैष्णव हैं और ये सर्वोत्तम सिद्धांत है जो समझने की वो है। We pray, Radhe Vrindavanadishe Karunamritavahini Kripaya Nijapadabja Dasyam Ajam Vidiyatam. Oh Shrimati Radharani, you're a river flowing with mercy. तो हम जैसे प्रार्थना भी करते हैं कि और राधा रानी आपके यहाँ एक नदी है जो कृपा से भरी हुई है। Kripaya Nijapadabja, give me some service, please. I'm begging service at your lotus feet. तो हम भीख मांगते हैं उससे कि आप प्लीज अपनी सेवा में लगाइए। This is our highest objective in Krishna Bhakti. और ये हमारा सर्वोत्तम लक्ष्य है कृष्ण भक्ति का। This is our highest objective in ISKCON. और ये हमारा सर्वोत्तम लक्ष्य है ISKCON में। There are stupid people that perhaps have never attended one of our morning programs that say, oh, in ISKCON, their highest thing they'll ever get because they're practicing Vaidhi Bhakti, they can go to Vaikuntha maybe. तो जो बाहर लोग हैं जो मूर्ख लोग हैं वो जल्दी ये समझते हैं ISKCON वाले ये तो मेरी भक्ति में लगे हुए हैं ये ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ तक जा पाएंगे। Because how do we go to Vaikuntha? To Goloka by Raga Marg. क्योंकि जो वैकुंठ से गोलोक हम राग मार्ग भक्ति करके ही जा सकते हैं। So they say they're not practicing Raga Yoga Bhakti, no Raga Marg, they'll only go to Vaikuntha. तो वो लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये वैकुंठ तक जा सकते हैं लेकिन रागों का भक्ति पालन नहीं कर रहे हैं तो ये गोलोक नहीं जा सकते। This is simply a biased, unfounded, stupid criticism. तो ये एक बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी ऐसा सोचना। What do we sing every single morning in every single ISKCON all over the planet? For every single ISKCON devotee attending morning program, what is our prayer? तो ये भी हम सुबह जब मॉर्निंग प्रॉग्राम में डेली प्रार्थना गाते हैं पूरे विश्व में प्रार्थना गाई जाती है वो कौन सी प्रार्थना है? Radha Krishna Seva Pavave Abhilasi. Not Lakshmi Narayan Seva Pavave Abhilasi. Radha Krishna Seva Pava. This is our Abhilas, our highest objective, to serve Radha Krishna in Goloka. तो जैसे हम सुबह डेली तुलसी आरती में ये गाते हैं कि राधा कृष्ण सेवा भाव यही अभिलाषी तो ये हाईएस्ट डायरेक्शन है ये हम मांग रहे हैं कि हमें राधा कृष्ण की सेवा चाहिए। Hene Vedana Dara Shakirano Gatakara Seva Adhikara Diyakoro Nija Dasi. This is highest rasic conception of Krishna consciousness. And we sing it every morning, praying this prayer. तो जैसे हम प्रार्थना जैसे तुलसी बता रहे हैं कि डेली गाते हैं और ये हमारा सर्वोत्तम यही लक्ष्य है जो ये प्रार्थना डेली गा रहे हैं। So, what is my nivedana, my prayer? इसलिए क्या मेरी प्रार्थना है क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से? To make me sakya, anugatya for the sakhis. What does that mean? Manjari bhav. तो हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं सखी अनुगत करो कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मंजरी भाव की हम प्रार्थना कर रहे हैं। Koro nija dasi. करो निज दासी। Make me your dasi. कि मुझे अपना दास बना लीजिए दासी बना लीजिए। Give me the adhikar for this service. मुझे अधिकार दीजिए अपनी सेवा करने के लिए। This is our prayer to Srimati Tulsi Maharani. और ये हम डेली प्रार्थना करते हैं तुलसी महारानी से। Some people say, why are you bowing down to plant? तो लोग जनरली कुछ लोग कहते हैं कि आप क्यों इस पौधे का आगे झुकते हैं? You're offering, you're worshiping some plant. What are you doing? Ding, 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 ding. क्या कर रहे हैं आप कि ये पौधे को आप वर्शिप कर रहे हैं डिंग 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 घटी हो जा रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? Who is this plant? लेकिन समझना होगा वास्तव में पौधा कौन है? Most confidential servants of Srimati Radharani. तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सेवक है राधा रानी जी का। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur prayed, Samasta Vaikuntha Shiromanashi Krishnasya Vrindavana Dhanyadami Datadikare Vishavanuputta Vrinde Namaste Charanarvindam. Is Srimati Radha, the topmost Vaikuntha planet is Goloka. तो जैसे श्री राम विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर की प्रार्थना में बताते हैं कि जो गोलोक का उन्होंने टॉप मोस्ट प्लैनेट And that entire realm has been given to Srimati Brinda Devi for arranging service for Radha Krishna. और पूरे वृंदावन की जो सेवा है वो श्रीमती बृंदा देवी को दी गई है। Srimati Radharani has given that responsibility to Brinda Devi.
तो राधा रानी जी ने वो जो जिम्मेवारी है वो वृंदा देवी को दी। So what is she doing? तो वो क्या कर रही है? How the wind will blow, what fragrance it will carry, what flowers will decorate the kunja, what flowers will decorate Srimati Radharani. तो वो ये सोच रही है कि कैसे ये कुंज में सारी लीलाएं, कैसे फ्लावर्स आएंगे, कैसे फूल आएंगे, कैसे पूरा ये जो अरेंजमेंट है किया जाएगा। What sweets will be offered, what savories, what drinks, what Srimati Radharani will wear, how her hair will be decorated, what flowers, everything is arranged by Vrinda Devi. तो क्या किस तरीके फूल राधा रानी को अर्पित होंगे, किस तरीके ड्रेस राधा रानी डालेंगी, कैसे श्रृंगार होगा, सारा कुछ वृंदा देवी ने। So we're praying, give me the adhikar to serve. We want this service. It's our highest aspiration. तो यही हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वृंदा देवी से कि हमें सेवा दीजिए और यही हमारा सर्वोत्तम अभिलाषा ही है। And every day we sing, Nikunjayono Ratikeli Siddha Yayalibhya Juktir Apekshaniya. What does it mean? Juktir Apekshaniya. Prabhuji, what does it mean? So, whatever desire for the service of Krishna, my spiritual master is arranging that. What is the meaning? Juktir Apekshaniya. Making tasteful arrangements for the service of Radha Krishna. Where? In Nikunja. Nikunja Lila. In Nikunja Lila. This is our meditation every day. तो हम देखिए स्मरण कर रहे हैं कि निकुंज लीला में कैसे जो वृंदा देवी हैं वो भगवान के लिए और राधा रानी के लिए लीलाओं के लिए जो व्यवस्था कर रही है। Now there's a class of person, foolish person, who thinks all these ISKCON acharyas, they're all neophyte devotees. लेकिन कई मूर्ख लोग भी होते हैं, क्या समझते हैं ये जितने भी आचार्य ISKCON में सारे भक्त हैं वो क्या है, मूर्ख हैं, नियोफाइट हैं, नहीं। And they say that preaching Krishna consciousness is karma. और वो क्या कहते हैं जो ये कृष्ण भावना वाले का प्रचार करना क्या है कि जस्ट कार्य एक्टिविटी है। Srila Prabhu was asked about book distribution एक बार शिला प्रभुपाद जी से किसी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा by my esteemed god brother Rameshwar Prabhu. By my esteemed god brother Rameshwar Prabhu. हाँ तो रामेश्वर प्रभु से पूछा कि प्रभु जी के बात Prabhupada said that book distribution is the activities of the gopis, bringing people into the fold of Krishna Bhakti. तो प्रभुपाद जी ने बोला रामेश्वर प्रभु को कि जो किताबों की सेवा है ये सेवा जो जीवात्मा को है वो भगवान के निकट लाने के लिए। So what is our expression of Nikunja Seva in this world? तो क्या हमारा एक्सप्रेशन है निकुंज सेवा के लिए? Following in the footsteps of our acharyas. कि हम अपने आचार्यों को बहुत अच्छे से फॉलो करें। Preaching Krishna consciousness. कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करें। Harinam Sankirtan. हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करें। Golokera Premadana Harinama Sankirtan. ये जो गोलोक है गोलोक से आया है हरिनाम संकीर्तन गोलोक से आया। Building temples and distributing books, distributing prasadams, going to colleges and preaching Krishna consciousness. कि हम प्रसाद का वितरण करें, हम मंदिरों का निर्माण करें, हम कॉलेजों में जाएं और इस कृष्ण भावना वालों का प्रचार करें। It's not karma, it's the most intimate expression of love of God. तो ये कोई कार्मिक एक्टिविटी नहीं है, ये एक सर्वोत्तम चेतना है कि हम इसको प्रचार कर रहे हैं। Not karma. ये कार्मिक एक्टिविटी नहीं है। So we should reflect on that, our good fortune of being engaged in the Sankirtan mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है, बहुत सौभाग्यशाली है कि हम इस चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जुड़े हुए हैं। And if we examine the activities of our acharyas, we will see this same truth manifest over and over again. और हम अगर आचार्यों के जीवन से ये तो हम देखेंगे यही चीज बार-बार आचार्य अपने जीवन शैली से भी सिखाते हैं। When Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur came to Radhakund, they made an engagement for him at the on the one bank of Radhakund. They made a preaching engagement for him. हाँ, तो जब जैसे भक्तिदास और ठाकुर जब राधाकुंड में आते हैं, इमीडिएटली वो प्रचार की सेवा में लगते हैं। And all the Radhakund Babajis begin to think, now we're going to hear the nectar, Rasa Katha. He's a great devotee and we're going to hear Rasa Katha. और वहाँ के जितने भी बाबा जी होते हैं वो सोचते हैं वो भक्तिदास और ठाकुर आते हैं तो अब हमें जो नेक्टर है वो सुनने को मिलेगा, जो रास कथा है वो सुनने को मिलेगी। Sweet Rasa Katha nectar. बहुत ही दिव्य रास कथा सुनने को मिलेगी। What did he preach? तो लेकिन भक्तिदास और ठाकुर क्या प्रचार करते हैं? Bacho Begam Manasakoda Begam Udra Pasta Begam
Control your senses. Get out of Maya. Be a devotee. तो भक्तिमार्ग में ठाकुर क्या प्रचार करते हैं? वास्तव में एक मंत्र करो कि आप इंद्रियों को संयम करिए और कृष्ण भावना का प्रचार करिए। This is our acharya. तो ये हमारा आचार्य का मुख है। Rupanuga Virodapa Siddhanta Dvanta Harini. Intolerant of anything that contradicted the message and teaching of Srila Rupa Goswami. तो जैसे कि बताया गया है कि रूपानुगा जो सिद्धांत है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारे प्रचार को रोकती है उसको सहन नहीं करना है। ये हमारा आचार्य का मुख है। We pray to Srila Rupa Goswami. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadam Haikam Dadati Swapadantikam. We worship Rupa Goswami. Why? He's our Rasa Acharya. He's our highest Acharya in Gaudiya Vaishnavism. तो हम रूप गोस्वामी का क्यों वर्शिप करते हैं, क्यों उनकी पूजा करते हैं? क्योंकि वो सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ आचार्य है हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। Why is that? What makes him highest Acharya? तो क्यों ऐसा क्यों है? क्यों उन्हें सर्वोत्तम आचार्य बनाया गया गौड़ीय वैष्णव? Because he understands the Manobhishtam, the innermost desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu. क्योंकि उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु है उनकी जो इच्छा है उसको समझ लिया है। What is that innermost desire? To do क्या इच्छा है चैतन्य महाप्रभु की? that everyone should go to Radhakund and do Lila, Ashtakali Lila Smaranam. कि सब लोग राधाकुंड में जाएं और वहाँ आस्था की लीला करें। Is that why Lord Chaitanya came? इसके लिए क्या लॉर्ड चैतन्य आए थे? We should all drop everything and move to Radhakund and sit and meditate all day long, doing black Nam? और क्या इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए थे कि हम सब लोग सब कुछ छोड़ के राधाकुंड में जाएं और वहाँ स्मरण करें? He came to preach Krishna consciousness, to teach Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. For a remote corner of the world, no piti viti acha jatanagaradi gram, sarvatra pichoy, hoibe more nam. That this chanting will go to every town and village, not to one tiny little place in the universe on the bank of Radhakund. Most sacred place, but is that restricted to that place only? चैतन्य महाप्रभु आए थे और उनका जो मिशन था, उनकी इच्छा क्या थी कि पूरी पृथ्वी में हर नगर में हर गांव में इस कृष्ण भावना का प्रचार हो, ना कि सिर्फ राधाकुंड में। दो राधाकुंड बहुत ही सर्वोत्तम स्थान है, लेकिन सिर्फ राधाकुंड में ही पूरी पृथ्वी में हर गांव में हर विलेज में हम चाहते थे उनके नाम का प्रचार। This is the Manobhishtam of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ये मनोविश्व में चैतन्य महाप्रभु To preach Krishna consciousness. कि हम कृष्ण भावना का प्रचार करें। Srila Bhaktivinoda Thakur, who is he in Krishna Lila? तो जो भक्तिविनोद ठाकुर है वो कौन है कृष्ण लीला में? Who is he? A spiritual identity. Kamala Manjari. तो वो कमल मंजरी है He's a participant in Krishna Lila. और वो भाग ले रहे हैं कृष्ण लीला में। Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Nayanamani Manjari, participant in Krishna Lila. ऐसे भक्तिविनोद सरस्वती ठाकुर भी भाग ले रहे हैं कृष्ण लीला में। All the Radhakund Babaji's got up and left. Oh, he's just a jnani. No rasa, no sweet Lila. And they got up and they left. But he's a participant in Krishna Lila. तो जो बाबा जी हैं जो राधा कुंड में सोच रहे हैं ये सिर्फ एक ज्ञानी है नहीं, लेकिन वो भगवान की लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं भक्तिविनोद सरस्वती ठाकुर And Srila Bhaktivinoda Thakur, और भक्तिविनोद ठाकुर भी। he had 500 Namhatas organized under him. तो भक्तिविनोद ठाकुर ने 500 नाम का प्रोग्राम चालू कर रहे थे। Extremely active in preaching Krishna consciousness, preaching Hari Nam and Kirtan. और वो बहुत ही एक्टिव थे, बहुत ही हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे थे। So what is Chaitanya Mahaprabhu's Manobhishtam? Jagai Sankirtana Prayer Yajantihi Sumedasa. Someone who has sufficient intelligence worships God Yajanti. How? Chanting Hare Krishna Maha Mantra and preaching Hare Krishna Maha Mantra all over the world. तो ये चैतन्य महाप्रभु का मनोविश्वास है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करें। So let the dogs bark. और जो कुकुर हैं उनको भोंकने देना चाहिए। There is a class of person who will never touch this. और ऐसे ही ये कई श्रेणी के लोग हैं जिन्होंने कभी भी इस पुस्तक को Because the way to understand this, the way to enter it, is to take up the preaching mission of Chaitanya Mahaprabhu. क्योंकि ये जो पुस्तक है, ये जो ग्रंथ है, हमें तभी समझ आएंगे जब हम महाप्रभु
के प्रचार की लीला में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। If I read a book about anatomy, does that make me a doctor? If I read a book about anatomy, does that make me a तो doctor? जैसे हम किसी तरह की एनाटॉमी की बुक पढ़े तो क्या मैं सिर्फ बुक पढ़ के डॉक्टर बन सकता हूँ? Just read some books and I can start operating on people, cutting and sewing. क्या सिर्फ बुक के माध्यम से बुक की नॉलेज लेके मैं लोगों का ऑपरेशन कर सकता हूँ, ऑपरेशन थिएटर में जा सकता हूँ? There's much more to being a doctor than just reading books. तो जो डॉक्टर बनना है वो बहुत इससे कहीं ज्यादा है सिर्फ किताब पढ़ने से। So there's a class of person, they'll read Krishna Karnamrita, Radharasa Nidhi, Gita Govinda, very esoteric books, Ujjala Nilamani. Now I'm Rasika devotee, I read the book. तो ऐसे ही कई श्रेणी के जो लोग हैं वो ऐसे तत्वों को पढ़ते हैं कि गोविंदा और अलग तत्वों को, और क्या सोचते हैं कि अब मेरे को जो ये रस है ये समझ आ गया, ये जो रस तत्व है इसको मैं समझ पा रहा हूँ। So if you want to participate in this, be part of this, part of the Hladini Shakti, serving Krishna in the most intimate way, there's a way to do that. तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस लीला को समझना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है? Srila Prabodhananda Saraswati Thakur made one beautiful prayer. तो प्रबोधन सरस्वती ठाकुर ने एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना करी। He said, Yata yata gaura paravinde vandeta bhaktim krita punya rasi tata toto sarpati hriddhika asmad radha padamboja shudhambu rasi. That if you want to take up the service of Srimati Radharani, if you want to be part of her entourage, if you want to serve Krishna in this way, there's a process. तो जो प्रबोधन सरस्वती महाराज उन्होंने प्रार्थना करी कि अगर आप राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं और इस लीला में एंटर करना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसेस है, उसका एक तरीका है। Take up the service of Lord Chaitanya Mahaprabhu. कि आप चैतन्य महाप्रभु के मिशन में कोई सेवा लीजिए। This is the process to become, to enter, to actually participate and not cheat. और ये एक तरीका है जिससे हम इस लीला में एंटर कर सकते हैं जब हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन में कोई सेवा लेंगे। Go out on the street and have people spit in your face. Go out on the street and have people spit on your face. ये आप बाहर जाएंगे और लोग आपके मुंह पे थूकेंगे। Get arrested and thrown in jail for being on a Harinam Sankirtan party or distributing books. कई वक्तों के साथ ये भी हुआ जब उन्होंने किताब वितरण करी तो उनको जेल में भी डाला गया, अरेस्ट किया गया। Get physically assaulted. और उन्हें शारीरिक रूप से बहुत यातनाएं भी दी गई। To go out and serve Chaitanya Mahaprabhu. कि जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी शुरू करी या चैतन्य महाप्रभु की सेवा में भाग लिया। To take up the mission, the Manobhishtam of Sri Chaitanya Mahaprabhu, to make Krishna consciousness available to every town and village on this planet. कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु का जो ये मिशन है कि हर जगह प्रचार हो, इसको अपने हाथ में लिया और बांटा। And this is the way to actually overcome and to move past the stage of anartha nivriti. और ये एक तरीका है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, अनर्थ निवृत्ति को पार कर सकते हैं। Because if you don't surpass the lust, the greed, anger, fear, malice, all the things that afflict us in this world, if you don't get over that and you talk about raga marg, you're simply a cheater. कि अगर आप काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर इनसे ऊपर नहीं उठ रहे हैं, इनको क्रॉस नहीं कर रहे हैं और सिर्फ यही चर्चा कर रहे हैं कि हम रागानुगा भक्ति करें और रासलीला के बारे में चर्चा करें, तो ये सिंपली एक चीटिंग होगा। Can you just decide, Rag, I'm going to be in love with Krishna? Yesterday I was smoking a cigarette, today I'm going to be Raganuga Bhakta. तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि एक मनुष्य, एक व्यक्ति कल एक सिगरेट पी रहा था और आज ये सोच रहा है कि मैं कृष्ण को प्रेम करना चाहता हूँ? You have to pass over anartha nivriti. तो आपको अनर्थ निवृत्ति को पास करना होगा। But anartha nivriti is not our objective, it's not our prayojana, it's not what we aspire for, just the rules and regulations. लेकिन अनर्थ निवृत्ति को पार करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा एस्पिरेशन नहीं है और ये हमारा प्रयोजन नहीं है। We have to go beyond the rules and regulations. और हमें अनर्थ निवृत्ति से आगे, नियमों से, रूल्स एंड रेगुलेशन से आगे भी जाना है। How does that happen? और वो कैसे होगा? Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayatyashu Vairagyam Jnanam Chayada Haitakam. Taking up the service, the sadhana of serving Radha Krishna, then one develops causeless knowledge and detachment. तो ये कैसे होगा कि हम वासुदेव की
कृष्ण की भक्ति में लगे, सेवा करें और धीरे-धीरे क्या होगा, अंदर ज्ञान भी आएगा और वैराग्य भी आएगा। If one hasn't surpassed that and he starts talking Radhe Radhe, Manjari Bhav, you're in Maya. तो अगर किसी ने अनंत सिद्धि को पास नहीं किया है और वो बातें कर रहा है राधे राधे मंजरी भाव की, तो वो माया में है। So what is the process Prabhupada gave us? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या प्रोसेस दिया है? Srila Jiva Goswami describes it in some sandarbhas. तो जीव गोस्वामी संदर्भ में बताते हैं, We're practicing Ajata Ruchi Raganuga Seva. Raganuga Bhakti. Ajata Ruchi Raganuga Bhakti. तो संदर्भ में बताया गया अजात रुचि रागानुगा भक्ति के बारे में जीव गोस्वामी। Ajata Ruchi means we don't have love of God. अजात रुचि का मतलब है कि हमारे अंदर कृष्ण के लिए कोई प्रेम नहीं है। Are we chanting and tears are coming from the eyes? Or are we chanting and ये हम कैसे जप कर रहे हैं, हम ऐसे जप कर रहे हैं क्या कि हमारे आंखों से निकल रहे हैं और हम ऐसे जप कर रहे हैं? honestly, Prabhu, Mataji, are your hairs standing on end? और क्या प्रभु और माता जी जो आप लोग जप कर रहे हैं, जब आप जप करते हैं तो ऐसा होता है कि Voice is choked up, hairs are standing on end. कि आपकी वॉइस बंद हो जाती है, गला कंठित हो जाता है, आपके बाल जो है खड़े हो जाते हैं जब करते समय। We're not there. Why pretend? तो ऐसा नहीं होता है। So Ajata, I'm sorry. तो जब ऐसा नहीं होता है तो क्यों इसको इमिटेट करना, इसको दिखाना, दिखावा क्यों करना? So Ajata Ruchi means Ruchi, love of God is our objective, but it hasn't manifest yet. तो अजात रुचि का मतलब है कि लव, जो भगवान का प्रेम है वही हमारा लक्ष्य है, लेकिन अभी भगवान का प्रेम हमारे हृदय में उजागर नहीं हुआ है। It will come. वो आएगा, उजागर होगा। But what do we have to do first? लेकिन हम उसके लिए क्या करना होगा? We have to pass beyond anartha-nibriti. तो उसके लिए हमें अनंत प्रवृत्ति को क्रॉस करना होगा, पास करना होगा। And this is called artha pravriti. और इसी को अर्थ प्रवृत्ति, To have feeling for God, to have feeling for Krishna, to have love of God. और ये इसी को बोलते हैं, इसी को कहते हैं कि हमें भगवान के लिए फीलिंग है, हमारे भगवान से आकर्षण है, हमारे भगवान से प्रेम है। You can't just go, like picking it off a tree. Yes, I'll have that thing. Very good. No, Radhe Radhe. तो हम ऐसे डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं कर सकते, कुछ होता है और राधे राधे। Radha Dasyam is our property, the property of the Gaudiyas, the property of the preachers of Krishna consciousness. But how to get it? You have to pass beyond anartha-nibriti. तो इसलिए हमें अनंत प्रवृत्ति का जो पाथ है ये क्रॉस करना पड़ेगा। And what is the difference between Vadi Bhakti and Raganuga Sadhana? और इससे क्या क्या भेद है? वैदिक भक्ति में और रागानुगा भक्ति में क्या भेद है? Just like Amit Prabhu very kindly drove me here. Amit Prabhu very kindly drove me here. और जैसे हमें तो बहुत ही अच्छे करते हैं। So he knows his way. He doesn't have to look, see, where am I? Where am I going? See, what's my GPS? Where am I going? He can get here, huh? Just like he can drive here with his eyes closed. He knows the city very well. He doesn't have to follow the rules of a GPS system. तो जैसे हमको पता है दिल्ली के बारे में, रास्तों के बारे में सब कुछ है, तो मैं इतना नहीं है जीपीएस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमको सब कुछ पता है, वो गाड़ी चलाएंगे। He just drives. वो सब बिल्कुल खुल के गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि सारे रास्ते पता है, हमें कोई रूल रेगुलेशन जीपीएस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। Raganuga Bhakti doesn't mean that you don't have to follow the rules. रागानुगा भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करने हैं। Because you have love of God. क्योंकि हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम है। Sadhana means the law of rules. Raga means the law of love. तो जो साधना भक्ति है उसका मतलब है जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और जो रागानुगा भक्ति है वो लॉ है लव का। Where will you get love of God? हमें कैसे मिलेगा? Only by passing. हमें कैसे मिलेगा भगवान का प्रेम? Only by passing through anartha-nibriti. सिर्फ अनंत प्रवृत्ति को क्रॉस करके मिलेगा। What's hard to understand? इसमें क्या मुश्किल है समझने का? Raghunath Das, topmost Raga Rasa Acharya. रघुनाथ दास गोस्वामी जो सर्वोत्तम आचार्य थे, His sadhana was like lines, Chaitanya Charitamrita described, like lines written in stone. You can never erase them. तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, जो सर्वोत्तम आचार्य हैं, तो उनकी साधना कैसी होती थी? जैसे पत्थर पे लकीर। Every day so many Dandavat Pranam to Vaishnavas, every day so many Pradakshina, Radhakun, every day so much mala. Without fail,
तो वो देवी के कई कई प्रणाम करते थे, वैष्णवों को और परिक्रमा लगाते थे और कई बहुत सारी अधिक मालाएं करते थे। कभी उनका ये जो नियम है कभी टूटा नहीं था। Was that Vaidhi Bhakti that Raghunath Das was practicing? क्या रघुनाथ दास तो स्वामी वैदिक भक्ति का पालन कर रहे थे? No, it's an expression of his love of God. नहीं, वो उनका ये तरीका था कि भगवान को प्रेम कर रहे हैं, वो ये उनका उससे वो प्रकट कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, Pujala Raga Pata Gaurava Bhange. We keep this Raga Marg. We want this. This is our objective, our prayojana, our highest goal of life. And we keep it here. We bow down to that and hope someday, some lifetime, I may come to that. तो भक्तिनाथ स्वामी ठाकुर कहते हैं, हाँ, राग मार्ग हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा प्रयोजन है, लेकिन हम उसे ऊपर करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं कि एक ना एक दिन किसी ना किसी जीवन में मैं इस स्तर पे भी पहुंचूंगा। In the meantime, we have so much work to do. लेकिन उसके बीच में अभी हमें बहुत कार्य करना है। Every time I come here, I'm astonished how much more beautiful your temple has become. तो जब भी मैं आता हूँ और इस मंदिर को विजिट करता हूँ तो मैं देखता हूँ ये मंदिर और कितना सुंदर हो गया है। And lakhs and crores of people are going to be coming here and they want to hear from you what is Krishna consciousness. और लाखों और करोड़ों लोग यहाँ पे आएंगे और वो आप लोगों से सुनना चाहेंगे कि कृष्ण भावना भाव वास्तव में है क्या? Lakhs and crores are going to be depending on you for their advancement in spiritual life. लाखों और करोड़ों लोग आप पे निर्भर होना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे वास्तव में कृष्ण भावना भाव है क्या? What does that mean? इसका क्या मतलब है? There's huge responsibility for each and every one of you. तो इसका ये मतलब है कि हम सब पे एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है To live what we talk about. कि हम वो वैसा आचरण रखें जो हम बोल रहे हैं। To be examples of Krishna consciousness. कि हम ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कृष्ण भावना भाव के लिए। Not just talk some high philosophy. और ना कि सिर्फ हम ऊंची फिलॉसफी बोले। But to show by our practical example what it means to be Krishna conscious. कि हम अपने उदाहरण से सिखाएं कि वास्तव में कृष्ण भावना भाव है क्या? When people come to our temple, they think, oh, your temple is very beautiful. Your books are very nice. जब लोग हमारे मंदिरों में आते हैं वो देखते हैं ये मंदिर कितना सुंदर है, यहाँ की कितनी सारी किताबें हैं। They want to see an example of Krishna consciousness in practical life. लेकिन वो ये भी देखना चाहते हैं कि कोई उदाहरण है यहाँ पे जो वास्तविकता में कृष्ण भाव को अपने जीवन में उतारता है। Happy, prosperous, peaceful grihastha ashrams. और वो मतलब देखते हैं कि क्या यहाँ पे खुश और प्रॉस्परस गृहस्थ हैं। Seriously renounced brahmachari sannyas life. और यहाँ पे क्या जो सीरियसली त्यागी ब्रह्मचारी हैं। Yadyaracharate sheshastatareva tarojana sayat pramanam kurate lokastad anuvartate. That the whole world will follow. They see the example of Krishna consciousness. तो जैसे यज्ञराज श्लोक में बताया गया है कि सारे लोगों के फॉलो करते हैं जिसका आचरण बहुत सर्वश्रेष्ठ है। Not that we're talking big high philosophy and Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe. Not showing example of what it means to be Krishna conscious. कि हम बड़ी फिलॉसफी ना बोले और फिर उसके बाद जाके कुछ ऐसी क्रियाएं ना करें और राधे राधे बोले, वो अच्छा नहीं है। So ISKCON is now 50 years old. तो अब जो ISKCON संस्था है उसको 50 साल हो चुके हैं। And this is really our foundational years of spreading Krishna consciousness. और ये हमारे अब जो ये साल हैं ये फाउंडेशनल ईयर्स हैं जिसमें हम कृष्ण भावना का और प्रचार कर सकते हैं। This temple will be here for hundreds of years. और ये जो मंदिर है यहाँ कई सालों तक। You'll all be in Goloka. The temple will be here. आप सब लोग गोलोक चले जाएंगे लेकिन ये मंदिर यहीं रहेगा। So dedicate yourself a life of responsibility for the welfare of human society. इसलिए अपने जीवन को समर्पित करें और एक जिम्मेदारी लें कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। Then the day will come when you return to Goloka. और एक दिन आएगा जब आप गोलोक में एंट्री करेंगे। And Srimati Radharani's assistants will say, you come do this service. और जो श्रीमती राधा रानी है वो आपको बोलेगी आप इस सेवा में आइए। And that is the perfection of life. और ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है।
Thank you very much for your kind attention. Srila Prabhupada ki jai. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. ISKCON Rohini ki jai. Keshav Murari Prabhu ki jai. Any comment or question? किसी का कोई क्वेश्चन प्रश्न या कमेंट है? Yes, who are you? So Prabhuji, I have a If there's no mic to speak loudly. Okay. Hare Krishna, thank you so much for wonderful lecture and your great association. So Prabhuji, my question is, I heard once past time of Srila Bhakti one time he visited Radhakund and then he burst out of all the Babaji's there. He did what? Bhakti Siddhanta Maharaj. Yeah. And so there's so many Babajis, they are doing some sadhanas and all that, doing some. So we think that they are doing own mental emotions. They are not doing perfectly like a karma. This could become a narak kun for them because they are not doing pure. Even a single Babajis are not doing this pure devotion service. That statement said by Bhakti Siddhanta Maharaj. So how can you understand what? Can you speak in Hindi? I understand your question. Prabhuji, एक बार भक्ति सिद्धांत सिंह महाराज ने विजिट किया था और उन्होंने वहाँ पे विजिट करके देखा कि इतने सारे बाबा जी क्या अलग अलग तरह की मेंटल मतलब साधना कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि इतनी ऑस्पिशियस जगह पे आए हैं लेकिन क्या है कि ये प्योर भक्ति नहीं कर रहे हैं और इस वजह से ये जो राधा कुंड है इनके लिए राधा कुंड बन जाएगा। तो मुझे एक ही भक्त यहाँ पर शुद्ध भक्त नहीं था। This is unfortunate. Yeah, but this is an exaggeration. ये क्वेश्चन है। It's an exaggeration. ये बड़ी शौक की बात है। It's not that there are no saints. ये बहुत अति शौक की बात है। ये अति शौक की। It's not that there are no saintly people doing legitimate sadhana bhajan at Radhakund. तो ऐसा नहीं है कि राधा कुंड में कोई अच्छे से भजन नहीं कर रहा। There's some very saintly people there that have all respect for ISKCON. और वहाँ पे बहुत ही ऐसे भी सेंटली लोग हैं जो अच्छे से भजन भी कर रहे हैं और ISKCON की बहुत रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। They are Vaishnavas. और वो वैष्णव हैं। But belonging to a different family. लेकिन वो अलग परिवार से हैं। Our family's business is to preach Krishna consciousness. हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो है कि हम कृष्ण का भावना और उसका प्रचार करें। And we will not get a different result than they aspire for. और We will not get a different result than the same thing they want. हमें भी वही जो रिजल्ट है वही मिलेगा जिसके लिए वो एस्पायर कर रहे हैं। But Radhakund is also full of miscreants and cheaters also. लेकिन राधाकुंड बहुत सारे ऐसे लोगों से भी भरा हुआ है जो चीटर्स हैं और जो ठीक से भक्ति का पालन नहीं कर रहे हैं। So we should respect every Vaishnava, any genuine Vaishnava. तो हमें सभी वैष्णवों का बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए। But there's nothing they can give us. This is the important point. This is the most essential, important point. ये सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। There's nothing they can give us that you can't get from Srila Prabhupada. कि वो ऐसा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है जो हमें श्रील प्रभुपाद भी दे सकते हैं जो वो दे सकते हैं। Because who is the topmost Rasika Vaishnava that the world has seen in the last 10,000 years? Srila Prabhupada. तो जो सबसे सर्वोत्तम रसमिक भक्त कौन है जो पूरे विश्व में पिछले 10,000 सालों में देखा है वो है श्रील प्रभुपाद। Some people have this twisted mentality that I need to find the top class Rasika Vaishnava. तो कई लोगों का ऐसा मानसिकता होता है कि उनके एक सबसे सर्वोत्तम रासमिक वैष्णव ढूंढना है। And to quote my exalted godbrother, Shri Srimad Gauragovinda Maharaj, people that are looking for shopping for a guru. तो जो प्रभुजी की godbrother है गौतम महाराज तो वो कह रहे थे कि लोग गुरु को ढूंढ रहे हैं, इधर-उधर ढूंढ रहे हैं।
even though they've been initiated by Srila Prabhupada. इसके बावजूद भी जो उन्होंने दीक्षा ले ली है श्रील प्रभुपाद जी से, Are simply fools. वो सिर्फ मूर्ख है। Gaur Govinda Maharaj says, I'll cut my head before I leave ISKCON. तो गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं अपना गला काट लूंगा अगर मैं ISKCON को छोड़ने से पहले। And there is nothing that any of these people can give you that is not available in our family from Srila Prabhupada. तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें कृष्ण भावना भावे दे नहीं सकती जो वो लोग दे सकते हैं। So Radhakund is full of rascals also. तो जो राधा कुंड है वो कई ऐसे लोगों से ही भरा हुआ है जो चीटिंग करते हैं। Apasampradaya. अब संप्रदाय से भरा हुआ है। I saw one man, he's a man, but he's dressed like a lady. और कई लोग ऐसे हैं जो इस पुरुष हैं लेकिन उन्होंने स्त्री का वेश धारण किया हुआ है राधा कुंड। A big long choti. और बहुत बड़ी उन्होंने शिखा लगी हुई है। What do you call his kankan? और कंगन पहने हुए हैं। Kankan. And bindi, और बिंदी लगाई है। cotton, उन्होंने गोपी ड्रेस डाला हुआ है। sari. साड़ी पहनी हुई है। And he's saying, if I dress that, I'll attract Krishna. Krishna will be snatching at my sari. और वो सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण को अपनी तरफ आकर्षित कर दूंगी। Krishna has interest in your sack of stool body. क्या कृष्ण का आपके शरीर में कोई इंटरेस्ट है? This is how you attract Krishna. इस तरीके से भगवान कृष्ण को आकर्षित करना चाहते हैं। Attract Krishna by cleansing your heart. How does that begin? Chaito darpanamarjanam. It's stupid. तो हम कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं जब हम अपने हृदय को शुद्ध करेंगे। चेतो दर्पण, जो हृदय में चेतो दर्पण होगा। Anybody can dress like a gopi. कोई भी गोपी की तरह ड्रेस कर सकता है। But if you want to be a gopi, if you want to serve in that capacity, serve as a cowherd boy, serve in Mother Yashoda's entourage, what is the beginning? Chaito darpanamarjanam. लेकिन अगर आप एक गोपी की तरह सेवा करना चाहते हैं, अगर एक कावड़ बॉय की तरह सेवा करना चाहते हैं, अगर यशोदा माता की तरह सेवा करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें। So it's not that everybody in Radha Kund is to be rejected. तो ऐसा नहीं है कि राधा कुंड में जो सारे लोग हैं उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। But we go there begging service. When we pray to Srimati Radharani, what is the practical aspect of her service? तो जब हम राधा कुंड जाएं तो हम राधा रानी से प्रार्थना करें कि आपकी जो सेवा है उसका जो प्रैक्टिकल क्या हम उससे कर सकते हैं। To approach her representative, you can't approach Srimati Radharani directly. हम राधा रानी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। You approach her representative, हम उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं। which means Srila Prabhupada and your Guru Maharaj. और इसका क्या मतलब है? जो उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन है? श्रील प्रभुपाद हैं और आपके गुरु महाराज हैं। So when we make this prayer, give me service to your lotus feet, what does it mean? तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, इसका क्या मतलब है? It means become a surrendered servant of your Guru. इसका मतलब ये है कि हम अपने गुरु के बहुत ही शरणागत सेवक बने। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। Prabhuji. हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर आपने हमें थोड़ा आईना भी दिखाया और हमें जैसे कि आपने दो चीजें बिल्कुल समझ आई। इसमें आपने बोला कि हमें नैष्ठिक की भक्ति प्राप्त करनी चाहिए और हर की से ऊपर उठना चाहिए और उसमें भजन किया जाए। दूसरा है प्रचार के लिए हम लोग को एक स्टैंडर्ड अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए। लेकिन कोई प्रचार में होता है कि हम भी आगे भक्ति में बढ़ रहे होते हैं और हमारे साथ जो लोग थे वो भी आगे भक्ति में बढ़ रहे होते हैं। हम इतना हमारा स्टैंडर्ड नहीं हो पाता या हम इतने स्तर पे नहीं आ पाते भक्ति के, लेकिन कई बार हमारे जूनियर जो है वो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। तो सेवा लेकिन ये है कि हमें उनको एग्जाम्पल दिखाना है, अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इससे इसको हम कैसे प्रेजेंट करें लोगों को कि दैट आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस थिंग और आई एम नॉट सो एडवांस इन भक्ति बट दिस इज द पाथ। Is this a way or how to preach in this situation? Because they are not qualified. He's thanking you for your great lecture, and he's saying like you have told to have a good acharan. Okay, if we are preaching Krishna consciousness, but sometimes what happen when we preach Krishna consciousness, and we also have to raise our standards, and our juniors also raise their standards. So sometimes juniors have very good standards than the preacher who is preaching.
So it becomes a challenge for the preacher to preach and set an example. So what can be done in that regard? Don't judge other devotees, भक्तों को जज मत करिए। especially if you're junior. Who are you? अगर आप जूनियर हैं, सबॉर्डिनेट पोजीशन पे हैं, तो आप कौन हैं? Yeah, they just get a brand new thread. Yeah, now I'm a Brahmin. See, I have this, and you wear it on your neck. See, I have this. Now I'm second initiated. Do Dandavat. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें अगर ब्राह्मण थ्रेड मिल गया है और उसको निकाल के दिखाएं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे धनुष करो सब लोग। What is it? There's many definitions of senior. तो कई तरीके हैं इसको देखने के। Like you're all senior to me by birth. You're born here in Bharat. I was born in Melodious. जैसे आप सब लोग मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, क्योंकि आप लोगों का जन्म भारत भूमि में हुआ है और मेरा जन्म एक वेस्टर्न कंट्री में हुआ है। Krishna Prabhu, senior to me by renunciation and knowledge. प्रभु जी हैं जो मेरे से वरिष्ठ हैं ज्ञान में, ज्ञान में। प्रभु जी ऐसा प्रभु जी का स्वभाव है। I have my home, my wife, my little grihastha pad. प्रभु जी कह रहे हैं कि उनको अभी घर में रहते हैं और उनका घर है, उनकी पत्नी है। So there's different standards: senior by age, senior by birth, senior by knowledge, senior by renunciation, senior by initiation. Many definitions of senior. तो कई अलग-अलग डेफिनेशंस है सीनियर की। वो सीनियर हमारे से उम्र में हो सकता है, सीनियर हमारे से दीक्षा में हो सकता है, सीनियर हमारे से प्रिंसिपल्स में हो सकता है। कई भाषाएं हैं सीनियर्स की। So do we go around asking people, Prabhu, what you're initiated in July, and I was initiated in December? Oh, you're my senior. तो हम ऐसा ना करें, हम लोगों से जाके पूछें कि प्रभु जी आपका दीक्षा कब हुआ था? आपका दीक्षा जुलाई में हुआ था? तो मेरा दीक्षा दिसंबर में हुआ था, तो आप मेरे सीनियर हैं। So what is our mode of behavior? तो हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? Respect everybody. कि हमको सब लोगों का क्या करना है? रिस्पेक्ट, सम्मान करना है। Srimad Gaur Govinda Maharaj said something very interesting. तो जो गोविंद स्वामी महाराज है इसके उसमें काफी अच्छी बात बताते हैं। He said, I want to tell you three secrets of how to make progress in Krishna consciousness. वो कहते हैं मैं आपको आज 3 रहस्य बताता हूँ कैसे आप कृष्ण भाव में प्रगति कर सकते हैं। He said, humility, पहला है humility, humility. पहला है विनम्रता, दूसरा है विनम्रता और तीसरा भी है विनम्रता। Don't be puffed up. इसलिए अहंकारी मत बनिए, अहंकार मत करिए। We see everyone as senior. हमें सबको वरिष्ठ देखना है अपने से। And if you feel that way, you won't criticize. अगर हम ऐसा नहीं देखेंगे तो हम निश्चित रूप से उनकी निंदा करेंगे। So be careful to criticize a Vaishnava or Vaishnavi. तो इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि हम किसी भी वैष्णव की निंदा ना करें। Okay? I know you don't, but it's a good question. Krishna Prabhu, we should end here. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Gaur.